are you going to? Who is going translating today? यशवी माता प्रभु जी। Subhangi, is that you? Yes. Okay. Yes, Hare Krishna Prabhu ji. Thank Yes, I am you. translating today. Hare Thank Krishna. you. Hare Yes, Krishna. Prabhu. Nice to see you. Okay. Let me just put it. Okay. Today we have in here first Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paskacha Desatani Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Svasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Okay. Today is Prahlad Maharaj, the ideal devotee. Now, we all love Nrsingadev. I love Nrsingadev in Mayapur. But the other day, I was in Mayapur and I was praying for Lord Nrsingadev, and I see Prahlad Maharaj in there. And I get some very intense understanding that you cannot love Nrsingadev without loving Prahlad Maharaj. Because the very fact that Nrsingadev came in this world to bless all of us because of his devotee Prahlad Maharaj. Yeah. Okay. सो आज का हमारा जो विषय है प्रहलाद महाराज जो वास्तव एक भक्त है। तो प्रभु जी का कहना है जो हमारे मायापुर में जो श्री श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान का जो विग्रह है, तो वहां से जब प्रभु जी ने दर्शन किए तो उनका ये कहना है कि उनको बहुत एक इंटेंस एक एक समझ हुई है, और समझ वो है कि जो प्रहलाद महाराज के कारण नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, और प्रहलाद महाराज के कारण हम सभी को उनका आशीर्वाद मिल रहा है। यस प्रभु जी। So, Prahlad Maharaj, the perfect example. Prahlad Maharaj, the perfect example of a pure devotion under a great stress. Great stress. There is other examples like the Pandavas. There is, Srila Prabhupada coming to America. Our own lives, sometimes we find a great stress, try to perform a devotional service. But above all, that's Prahlad Maharaj. यस। तो प्रहलाद महाराज जो है वो सबसे एक बेहतरीन हमारे पास उदाहरण है कि वो सबसे मतलब प्योर डिवोशन का शुद्ध भक्ति कैसे की जाती है। वो भी कैसे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा जब टेंशन हो जाता है उसके अंदर में, उनके अंदर में रहते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छी भक्ति की, उनका एक उदाहरण है। और भी उदाहरण हमारे पास है, जैसे पांडव है, श्रील प्रभुपाद है। और कभी कभी हमारी लाइफ स्टाइल जो हमारी जो लाइफ होती है वो भी हम कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब में से भी सबसे जो बेहतरीन एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन उदाहरण है वो प्रहलाद महाराज का है। यस प्रभु जी। So Prahlad Maharaj also, not, he's showing by example his pristine devotion to Lord Nrsingadev. He also gives us some transcendental knowledge. Amongst them, there is this beautiful verse, Sri Prahlad Ovacha, Shravanam Kirtan Vishnu Smaranam Pada Sevanam. This is the ninth process of devotional service. Hearing chanting about Lord Vishnu and among the nine process of devotional service. That's Srimad Bhagavatam, 7th canto, 5, chapter 23, 24 verse in the 7th canto. ओके। सो प्रहलाद महाराज जो है वो हमें ये भी बताते हैं उन्होंने कैसे नरसिंह भगवान की भक्ति की, वो भी हमें बताते हैं। और इन सब में ये भी है, हमें और भी हमें जो कुछ सीख देते हैं वो है श्रीमद् भागवतम के 7.24, 23 और 24 चैप्टर में है। उसमें प्रहलाद महाराज स्वयं कहते हैं, प्रहलाद उवाच श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम विष्णु, मतलब विष्णु भगवान के बारे में ये कुछ भक्ति के 9 स्टेप्स है, उनके बारे में यहाँ पे व्याख्या है। यस प्रभु जी।
Prahlad Maharaj, he was only 5 years old. This is the time, at least now in Kali Yuga, people are just learning to play games and go in the computer. He has an unwavering faith in Lord Vishnu. This is the sumo bonus of the teachings of Prahlad Maharaj by his own personal example. He showed us his extremely attachment to Lord Vishnu. तो प्रहलाद महाराज जो थे वो सिर्फ 5 वर्ष की आयु में भगवान की भक्ति, विष्णु भगवान की भक्ति कर रहे थे। तो उस टाइम पे बहुत छोटे होते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छा एक उदाहरण हमारे लिए एक पेश किया है। और लेकिन अभी जो है आजकल की उम्र में जैसे 5 साल के 5 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं वो गेम खेलते हैं, कुछ सीखते हैं, छोटा छोटा से भी होता है। लेकिन प्रहलाद महाराज का ऐसा है कि उन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति की। यस प्रभु जी। So Prahlad Maharaj, he did not become a devotee because his life was good, it was easy. I mean, he was the son of this great, powerful personality, right? Hiranyakashipu, right? He was he had everything. He was a rich kid. He has living in great luxury, But Prahlad Maharaj, he was not interested in that. Actually, he became devotee despite all this, despite all this surrounding hostility, and he did not waver his devotion. Yeah. तो प्रहलाद महाराज जो थे वो शुरू से कोई भक्त नहीं थे, क्योंकि प्रहलाद महाराज जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया था वो बहुत ही जैसे हिरण्यकशिपु जो थे बहुत ही जाने माने उस टाइम के, बहुत ही ज्यादा मतलब रिच घर घर परिवार से वो बहुत थे। और उनका ऐसा था लग्जरी परिवार, बहुत सारी फैसिलिटीज थी उनके पास। और उनको इन लेकिन उन जो प्रहलाद महाराज है उनको इन सारी चीजों में कोई इंटरेस्ट, कोई मतलब लगाव नहीं था, लेकिन उनको भक्ति में लगाव था। यस प्रभु जी। So where the greatness of Prahlad Maharaj come from? So he had this pure devotion without personal motive. He didn't want anything. Matter of fact, at the end, Lord Nrsimhadev said, what do you want? That's the Lord telling you, what do you want? He could give anything, a whole universe, and anything. And he said, I don't want anything. I just want to love you. His fearlessness, because he depended entirely on Krishna, something we can, learn from. Very hard, but we should learn from Prahlad Maharaj. Compassion, even towards those who hate him. He didn't want to finish his father anything. He accepted Lord Nrsimhadev, the fight. His father was demised. He accepted that, but he asked the Lord to be compassionate towards his father, and he has a constant remembrance of the Lord. ओके। तो प्रहलाद महाराज जो है उनके अंदर एक जो बहुत ही शुद्ध भक्ति जो आई है, वो ऐसा नहीं कि उनको कुछ ऐसे चाहिए था, वो मतलब निस्वार्थ भाव से भक्ति कर रहे थे नरसिंह भगवान, मतलब विष्णु भगवान की। और अंत में जैसे नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने प्रहलाद महाराज से पूछा कि आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हो, मैं आपको आप जो कहोगे मैं आपको दूंगा ऐसे। तो प्रहलाद महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि मैं आपसे प्रेम करूं, बस यही चाहिए। और हमें ये चीज सीखनी चाहिए कि उनका हृदय जो प्रहलाद महाराज का कितना निर्मल, कितना कोमल है। उनके जो पिता थे जो कैसे वो राक्षस थे, फिर भी उनके प्रति, उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं कहा उन्होंने। यस प्रभु जी। Prahlad someone Maharaj, sorry प्रभु जी, yes, someone has unmuted their mic, yeah, please I mute think their it's mic. Pratyay. Yes, thank you. So Prahlad Maharaj, innocence and determination, okay? Like a child naturally trusting his father, Prahlad Maharaj trusted Lord Nrsimhadev all his heart. So although tortured repeatedly, he never became angry. He never thought, why is God allowing this? Instead, he remembered Krishna continuously. Sorry प्रभु जी, I couldn't got your point here, could you please repeat? Sorry. Yeah. Prahlad Maharaj, he trusts Lord Nrsimhadev like a child trusts his father. Okay.
he was tortured repeatedly, and he never got angry. Matter of fact, you can see it in Ashinga Bhagavan, the movie. He is very compassionate. He doesn't get angry. He accepts everything, fully trusting the Lord. He never thought, why is God allowing this? यस। तो प्रहलाद महाराज जो है वो इतने सुकोमल थे, इतने इनोसेंट थे कि वो उन्होंने भगवान पे, भगवान विष्णु पे इतना मतलब ट्रस्ट, इतना विश्वास किया जैसे अपने पिता पे करते हुए से। और बहुत सारे उनको डिफिकल्टी भक्ति करते हुए भी बहुत आए, लेकिन उन्होंने कभी उठकर ये सवाल नहीं किया कि मुझे आपकी भक्ति करते हुए भी सारी इतनी डिफिकल्टी, इतनी परेशानी क्यों हो रही है। यस प्रभु जी। So, this trusting of the Lord, it's a delicate point. It's a very tough point sometimes. I have god brothers of mine that they were serving Krishna, but they have some difficulty. The wife left. So they have a crisis of faith. They even left Krishna consciousness. They went, become some other religion, easy for them, gave all the books away. My god brothers. They have a crisis of consciousness. You see? So we have to be strong in our, let's say, determination in devotional service, because we will be tested. We will be, according to our means, according to our position, we will be tested. So we should prepare. We should see ahead and prepare. Prepare means properly chanting, properly following, associating, and never put ourselves in a situation that we can be distracted from devotional service. yes. तो भगवान पे जो लगातार जो अपना विश्वास बनाकर रखना, ये सबसे बहुत डेलिकेट, सबसे बहुत टफ पॉइंट है। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि प्रभु जी के कुछ गॉड ब्रदर्स हैं, इनके जो गुरु भाई है, उनके साथ ये कुछ इशू हुआ है कि उनके जो विश्वास है वो थोड़ा डगमगा गया, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ इश्यूज आ गए, जैसे कि उनकी जो धर्म पत्नी होती है उनको छोड़ गई, कुछ फैमिली इशू हो गए। तो उस वजह से उनके अंदर क्या हो गया कि उनका जो फेथ था, जो भगवान के प्रति जो विश्वास था, उसके अंदर कमी आ गई, और उन्हें भक्ति को भी छोड़ दिया, और सारी चीजें मतलब उन्होंने भक्ति लाइफ की जो होती है वो छोड़ दी। तो यहाँ पे हमें भी ये चीज सीखनी होगी कि जो हमारा जो भगवान के प्रति जो विश्वास है, हमारा जो डिटर्मिनेशन हमें जो रखना चाहिए, वो बहुत ही एक स्ट्रांग बना के हमें रखना चाहिए हमारे जो डिवोशनल लाइफ की जो है। और हमें लगातार जो है इस पर काम करना चाहिए, और वो हम लगातार इसको कैसे स्ट्रांग करेंगे, हम हमारा जप अच्छे से करेंगे, हमारा श्रवणम अच्छे से करेंगे, और यहाँ वहाँ हमारा जो मन भटकता है उसे हम फिर से लेके आएंगे भक्ति पे, और ऐसे हमें कांस्टेंट हमारा जो फेथ है भगवान के प्रति वो और डिटरमाइन अच्छे से स्ट्रांग बनाना। यस प्रभु जी। So when Lord Nrsingadev appeared, and then you have this incredible fight with Hiranyakashipu, and the powers that both of them displayed was, no, the demigods, they were scared of Hiranyakashipu. So Nrsingadev defeating Hiranyakashipu, the demigods, despite being demigods, they were afraid of Nrsingadev because he was really angry. या तो जब भगवान का जब प्राकट्य हुआ, तो उसमें ये हुआ कि जो हिरण्यकश्यपु है और जो भगवान है, भगवान नरसिंहदेव, इनके बीच में बहुत ही एक विषम युद्ध हुआ। तो उस एक समय ऐसा था कि जो हमारे जो देवी देवता है, जो जो देवी देवता है, उनके बीच वो जो है वो हिरण्यकश्यप से बहुत डरते थे। लेकिन भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो वो इतना मतलब विचंबित करने वाला था कि जो डेमिगॉड्स जो हिरण्यकश्यप से डर रहे थे, अब वो भगवान के इस रौद्र एक जो रूप होता है उससे भी वो डरने लग गए थे। यस प्रभु जी। So the demigods, being the demigods, they're smart. So they could see the relationship between Prahlad and Lord Nrsinga.
They could see the love between Prahlad and Nishinga. The demigods, they love the Lord Vishnu. The demigods, they have a relationship with Lord Vishnu. Definitely, they had a relationship with Lord Nishingadev, but not in the same level as Prahlad Maharaj. They had this incredible love for Lord Nishingadev. So Prahlad, he didn't see Nishingadev, his rage, his anger. He didn't see that. And he approached by the demigods, they said, Prahlad, come, come. He approached Lord Nishingadev, immediately pacified Lord Nishingadev because of the love between the two of them. हम्म जो डेमिगॉड्स जो देवी देवता जो है वो बहुत ही स्मार्ट है, यहाँ स्मार्ट जो है। तो उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा ये एक अपना आ, थोड़ा सा मतलब ऐसे कहते हैं ना, थोड़ी सी कुछ चाल चली या फिर अपना दिमाग चलाया, थोड़ा सा ऐसा हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने देखा कि जो भगवान जो लॉर्ड नरसिम्हा भगवान है, लॉर्ड नरसिम्हा और जो प्रहलाद महाराज है, इनके बीच का जो रिलेशन है वो देखा कि कितना प्यारा है। तो उन्होंने क्या किया, जो प्रहलाद नरसिम्ह भगवान जो है उनसे मतलब डेमिगॉड जो है देवी देवता वो भी इतना प्रेम करते हैं, लेकिन उतना नहीं महाराज। तो उन्होंने क्या किया, प्रहलाद महाराज को आगे किया कि आप जाओ और नरसिम्हा भगवान जो इतने क्रोधित है उन्हें आप जाके शांत करवाओ। तो ऐसे करके फिर प्रहलाद महाराज जो है वो नरसिम्हा भगवान के पास गए, और प्रहलाद महाराज ने क्या किया कि नरसिम्हा भगवान का जो क्रोध है उसे नहीं देखा, वो जस्ट चले गए। क्या श्लोक जी? So Prahlad Maharaj, he has completely loved Lord Nrsingadev here and there, and by seeing Prahlad Maharaj, the Lord becomes pacified. His anger was subdued. And then Prahlad Maharaj offered prayers to Lord Nrsingadev. You see, and the demigods were there seeing this whole thing taking place. So यस। to the demons, Lord Nrsingadev, he was terrifying. The demigods, they were not terrified of Lord Nrsingadev. They were afraid of the anger. This anger is something hard to deal with. They're not afraid for their lives. They're afraid that the anger was taking over everything. You see? So Lord Nrsingadev, he becomes pacified by Prahlad Maharaj. So for Prahlad, Lord Nrsingadev, he was not terrifying like he is for the demons. He was the affectionate protector. यस। तो जो प्रहलाद महाराज को जैसे उन्होंने डेमिगॉड्स ने जो देवी देवताओं ने जो अप्रोच किया था कि आप जाके नरसिम्हा भगवान को शांत करवाए उनके क्रोध को, ऐसा करके, तो वो धीरे धीरे जैसे नरसिम्हा भगवान के पास गए प्रहलाद महाराज, तो उनको देखते ही वो एकदम शांत हो गए, एकदम उनका जो क्रोध था एकदम बिल्कुल एकदम शांत हो गया। तो जो और फिर उन्हें कुछ प्रार्थना स्तुतियां गाई नरसिम्हा भगवान के लिए प्रहलाद महाराज ने। और यहाँ पे और ये सब जब हो रहा था तो सारे जो देवी देवतागण है वो भी वहीं पर उपस्थित थे। तो देवी देवता जो है वो नरसिम्हा भगवान से ऐसा नहीं कि जैसे राक्षस जो है वो भगवान से जब प्रकट हुए जब उनसे डर रहे थे, ऐसा नहीं कि जो देवी देवता वो भी उनसे उसी तरीके से डर रहे थे। वो भगवान से नहीं डर रहे थे, वो भगवान से प्रेम करते, लेकिन उनका जो गुस्सा था, उनका जो क्रोध था वो उससे डर रहे थे, क्योंकि उनका क्रोध जो था वो बहुत ही ज्यादा ऊंचे लेवल पर था। यस प्रभु जी। So that is a principle in the Bhagavad Gita, chapter 9, verse 29. I'm equal to all, but to whoever renders service into me in devotion, he's a friend, he's in me, and I'm also a friend to him. You see, so the Lord reciprocate accordingly to our approach to him. We're sincere, we're honest, the Lord reciprocate in that fashion. If you try to be tricky and you try to manipulate the Lord, sometimes you do try, but the Lord can see deep in your heart, and the manipulation means nothing. The Lord reciprocate accordingly. Sometimes he gives the blessing, and the devotees or the person may, he gets trapped by that boom of mercy.
But when he gives a mercy to the devotee, it's something that helps the devotees become more attached to him. तो भगवत गीता में बताया है 9 चैप्टर नंबर 9 के 29 श्लोक में कि भगवान ने उसमें ये बताया कि मेरे लिए सभी एक है, लेकिन मतलब सभी एक ही स्तर पर है सभी जीव के बारे में। और लेकिन जो मेरा भक्त है, जो मेरी पूजा करता है, वो मेरे बहुत नजदीक है, मैं उनका मित्र हूँ, ऐसा मतलब बताया है थोड़ा। और ये सबके लिए कैसा है कि जो जिस लेवल पर होगा, भगवान जो है वो उसी तरीके से रेसिप्रोकेट कर देंगे, उसी प्रकार से आदान प्रदान करेंगे। और भगवान भी सबके हृदय में है। जैसे वो देखते हैं कि अगर कोई बहुत ज्यादा ट्रिकी है, कोई मैनिपुलेट करता है, थोड़ी सी कुछ ऐसे बदमाशी काइंड ऑफ थोड़ा करता है, तो भगवान सब जानते हैं और उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट भी करते हैं। और भगवान कभी कभी उन पर कृपा भी करते हैं। प्रभु जी, व्हाट यू सेड अबाउट दैट mercy part, like how that mercy can trap the devotee? The mercy can what? How can the mercy trap the devotee? What you said about that? Mercy trends. No, trap the devotee, like. Oh, not the devotee. When a devotee or a person he thinks is a devotee and he asks some material benefit from the Lord sometimes gives the benefit, and the benefit causes the devotee to become detached from the uh, very thing he desired before. Okay? Uh, like Lord Vishnu, he gave Dhruva Maharaj. He was ready to give him anything also. And Dhruva said, no, I don't want anything. But then the Lord gave anyway. Some devotees, they approach Krishna with the material desire. And the Lord give that particular thing that the devotee wants, but he gives in a way that purifies the heart of the devotee. Once he gets, that's not so important anymore. yeah. Okay. Understand? यस प्रभु जी, थैंक यू। सो अभी ऐसा प्रभु जी ने जो बताया है वो कि जो भगवान जो जैसे कोई नॉर्मल पर्सन है, वो भगवान से जाके मतलब ऐसे करता है कि हाँ मैं आपका भक्त हूँ और मुझे इस भौतिक संसार की इसमें यहाँ पे रहते हुए कुछ इच्छा है, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरी वो इच्छा पूरी कर दो। तो भगवान पूरी इच्छा कर देते हैं, लेकिन क्या करते हैं फिर धीरे धीरे उसी चीज से उसे मतलब उसे प्योरीफाई कर दे, थोड़ा उसे डिटैच कर देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज का जो उदाहरण यहाँ पे प्रभु जी ने बताया कि ध्रुव महाराज से भगवान ने अंत में पूछा था, जैसे उनके सामने प्रकट होके कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं आपकी इच्छा पूरी करता हूँ। तो ध्रुव महाराज ने कहा मुझे कोई इच्छा नहीं है, ऐसे करके। तो वो मैं यहाँ पे एक उदाहरण है। यस प्रभु जी। What happened is sometimes we try to surrender to the Lord, but it's hard because we think, well, I have this desire or I have to surrender, and the Lord has to act in a certain way because I'm surrendering to Him. We expect the Lord, well, I surrender, I have to get some kind of reciprocation. But the Lord don't see the things the way we see. He sees the heart, He sees the material world, the material energy. He sees our many past lifetimes, you see. So sometimes He gives what we desire in a way that fulfills that desire, and He purifies at the same time. It's like when you go for a root canal, He gives injection, and at the same time you have pain, the pain is gone because you get the anesthetic. See, so the Lord may do like that. And He purifies by offering us a little bit of our material desire, but He gives it in a way that He makes you think that it is not exactly important. And the important thing is the relationship with the Lord. यस। तो यहाँ पे ये बताया प्रभु जी ने कि हमारा हम कभी कभी कोशिश करते हैं भगवान को पूरा अपना खुद को समर्पित करने के लिए। और उसमें कभी कभी होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी ये इच्छा है, हमारी वो इच्छा है, और हमारे पास तो भगवान उसके हिसाब से थोड़ा एक्ट करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। और हमारे जो बहुत सारे पूर्व हमारे और ये डिजायर्स का साथ ही हमारे जो पास्ट लाइफ जो है वो वहां से ये वो करके ये भौतिक संसार की बहुत सारी हमारे पास इच्छाएं आती है। तो भगवान जो है वो सारी इच्छाओं को कैसे मतलब
पूरा करेंगे उसके भगवान के हिसाब से, वो भगवान पर है, तो वो जैसे इच्छा पूरी करेंगे और भौतिक संसार की, और वो धीरे धीरे बताएंगे भी कि रियल में तुम्हारा गोल ये नहीं है, रियल में तुम्हारा गोल कुछ और है, वो है भगवान से मतलब रिलेशन बनाना, वो चीज। तो जो डिजायर पूरी करेंगे, लेकिन वो भी कैसे, धीरे धीरे वो मतलब उनसे हमें डिटैच कर देंगे। जैसे प्रभु जी ने यहाँ पे रूट कैनल का एग्जाम्पल बताया के रूट कैनल के वहाँ पे मतलब जो वो अंदर कुछ ट्रीटमेंट जो करनी होती है, तो वहाँ पे उनको इंजेक्शन देते हैं, तो इंजेक्शन देते तो क्या होता है, एनेस्थीसिया से लाइक वो सून पड़ जाता है, फिर वहाँ पे जाके उनपे लाइक कुछ कार्य कर सकते हैं। तो सेम ऐसे भक्ति में भी है। यस प्रभु जी। So Prahlad Maharaj also, at the end, he asked Lord Nrsimha, please forgive my father. And look, his father did a lot of bad things, to the world and to Prahlad Maharaj. He was actually very mean to Prahlad Maharaj. It's like child abuser type of thing. And he actually want to destroy Prahlad Maharaj because his devotion shine a bright light on his whole nonsense life. And he wants to get rid of Prahlad Maharaj so he can feel, I'm the powerful personality. And how can this kid, have some power over me? He's not even afraid of me, despite of all the things he tried to do. And those are serious things, you see. So Prahlad Maharaj asked, please forgive my father. He's like this, and but he was already gone anyway. He asked, please give him some mercy. He was not revengeful. He was not angry at his father. This is a kid that everybody likes. Who doesn't like Prahlad Maharaj? You hear about his life, his story. 5 years old. It's a nice kid. I love the kid. It's nice. It's approachable. I feel like it's not a pundit. He's not a super yogi. It's nothing. It's a great devotee. And he has intense love for Lord Vishnu, you see. And Lord Vishnu appear for his devotee. I'm going to get to that part now. Go ahead, Mata. यस। तो प्रहलाद महाराज जो है, जब भगवान जब उनके सामने प्रकट हुए, तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने कहा कि प्लीज मेरे पिताजी जो है उनको आप क्षमा कर दीजिए। और उनके पिता जो हिरण्यकश्यपु है, जो हिरण्यकश्यपु मतलब जो राक्षस है, उन्होंने वास्तव में सबको मतलब डराने के लिए और प्रहलाद महाराज को भी डराने के लिए उन्होंने सारी संभव कोशिश कर ली, और ये बताने के लिए कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, मुझसे डरो, मैं ही भगवान हूँ, ये सारी चीज करने के लिए उन्होंने सारी हदें पार कर दी। और जो प्रहलाद महाराज जो है, उन्हें पूरे तरीके से उनको डिस्ट्रॉय करने की उन्होंने सारी कोशिश कर ली। लेकिन प्रहलाद महाराज जो है, उन्होंने लास्ट में फिर से यही कहा नरसिंह भगवान से कि प्लीज मेरे पिताजी को क्षमा कर दीजिए, मैं उनसे क्रोधित नहीं हूँ। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज जो है, उनका हृदय कितना कोमल है। वो एक बहुत ही एक छोटी आयु से उन्होंने भक्ति करनी शुरू की, बहुत ही एक प्यारे बालक है वो। सब लोग जानते हैं प्रहलाद महाराज के बारे में, उन्होंने सबों ने सुना है प्रहलाद महाराज के बारे में। वो कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़े कोई संत महात्मा है, मतलब बचपन से, क्योंकि छोटे थे ना बहुत, तो ऐसा नहीं बहुत बड़े संत महात्मा है, कोई बहुत बड़े योगी है, नहीं। वो नहीं, वो भगवान के एकदम शुद्ध भक्त थे। यस प्रभु जी। So, Prahlad Maharaj caused the appearance of the Lord the manifestation of the Lord in such most amazing way. I have seen books, holy books, talking about God, movies, all kinds of things. But I never see a move or anything that as the Supreme Lord, he appears from a pillar by breaking the pillar and appear to chastise this great demon, powerful demon. ओके। तो प्रहलाद महाराज जो है, वो सबसे बड़े कारण रहे भगवान के जो प्रकट हुआ नरसिंह भगवान का जो इस रूप में, उनके प्रकट होने का प्रहलाद महाराज जो कारण बने। और प्रभु जी यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी धर्म ग्रंथ की और बहुत सारी ऐसी बुकें हैं, बहुत सारी ऐसी मूवीज है
कहीं पर भी ऐसा नहीं बताया, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं चीज बताई कि जो बहुत बड़ा एक स्तंभ है उसमें से मतलब उसको चीर फाड़ करके भगवान प्रकट हो रहे हैं। यस प्रभु जी। And why Lord Nrsingadev appeared from that pillar? Because the great demon Hiranyakashipu, he tried to manipulate Prahlad Maharaj, his son. He tried to catch him in a lie. He tried to make Prahlada say something that he can point the finger and say, aha, look at that. You're lying. He's not appearing from the pillar. He's not appearing, whatever. He tried to be a really smart guy. But it turns out that he got the short end of his smartness. यस। तो यहाँ पे प्रभु जी बता रहे हैं कि भगवान जो है वो सिर्फ पिलर से ही क्यों प्रकट हुए। एक यहाँ पे एक सवाल होता है। तो जो ग्रेट मतलब बहुत बड़े जो राक्षस है हिरण्यकश्यपु, वो ऐसे मतलब उनके जो सन है प्रहलाद महाराज, वो उनको चाह रहे थे कि मैं जैसे बोलूं वैसा हो। और देखो उन्होंने जो उनके जो शब्द थे कि इस पिलर में क्या कुछ है, देखो कुछ नहीं है, ऐसा करके उन्होंने जो बोला, तो ये चीज को नकारने के लिए भगवान वहां से प्रकट हुए। यस प्रभु जी। The Lord, with this whole thing, he was setting up a trap for Hiranyakashipu, and he fell line, sink, and they stick, whatever that is. He fell through completely. It's a trap because he said, the Brahma said, what is this Vishnu? He asked Prahlad. Oh, he's everywhere. He's in your heart. And then he said, well, he's here in this pillar. So now he said, yeah, nobody's going to appear in this pillar. I got this Prahlad. He's in my hand now. He's a liar. You see, he tried to make Prahlad to be a liar. He's not going to come in here. But what makes the Lord appear is intense love for his Prahlad. See, he said he can tell anyway, I will appear from the atom, I will appear from the ocean, I will appear from the moon. If Prahlada said you appear from the sun, Nrsingadev appear from the sun. He said yes, he is inside the pillar. You see, such a faith, such an innocent faith of a young, innocent boy. You see? And Hiranyakashipu, he said, now I'm going to get this. And he took the sword and he struck the pillar to show his atheistic mentality of destroying the innocence of his child. I'll prove to you you're wrong. And here is, I get my sword and I kick this pillar. यस। तो ये मतलब प्रहलाद, सॉरी, नरसिंह भगवान जो पूरे पिलर में से यहाँ पे जो प्रकट हुए, तो ये एक जो पूरा एक जो लीला होने वाली लीला जो हुई, वो एक्चुअल में इसलिए हुई जो हिरण्यकश्यप जो राक्षस है उनको ट्रैप करने के लिए। और उसमें ऐसा हुआ कि जैसे मतलब प्रहलाद प्रहलाद महाराज को उनके शब्दों को नकारने के लिए, उनको गलत साबित करने के लिए हिरण्यकश्यप हमेशा उनके पीछे लगे रहते। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस पिलर क्या, यहाँ पे तुम्हारे भगवान है क्या, यहाँ पर क्या इस पिलर में तुम्हारे भगवान है। तो प्रहलाद महाराज ने उनका ये फेथ था, उनका ये विश्वास था, उन्होंने लेके हाँ कह दिया। तो यहाँ पे जो हिरण्यकश्यप जो राक्षस है, उन्होंने ये मतलब खुश हो गए कि हाँ अब तुम पकड़ में आ गए, यहाँ पे थोड़ी भगवान हो सकते हैं ऐसे करके। तो ऐसे लेके वो बहुत ही ज्यादा मतलब जोश भरे से उन्होंने अपनी जो तलवार थी वो पिलर पे ऐसे लगाई, बहुत मतलब जो भी होगा उनके पास शस्त्र, और ऐसे लगाया। फिर उसमें से भगवान जो है वो प्रकट हुए। तो यहाँ पे और वो भगवान जो है नरसिंह भगवान क्यों प्रकट हुए उस पिलर में से, ये बताने के लिए कि प्रहलाद महाराज को जो विश्वास है उनके प्रति, भगवान के प्रति, वो बताने के लिए, उनका जो इंटेंस लव है प्रहलाद महाराज का भगवान विष्णु के लिए, इसलिए वो वहां से प्रकट हुए। और कहीं ना कहीं जो ये डिमन जो है राक्षस जो हिरण्यकश्यप, उनके लिए एक ये ट्रैप भी था। और यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि इतना जो विश्वास है प्रहलाद महाराज का, अगर वो चाहे, अगर वो कहते तो कि लाइक भगवान जो है हर एटम में, हर एक कण में भी है,
मतलब समुद्र में है, मून चांद में है, सन में है, मून में है, अगर वो ऐसा कहते तो वो भगवान वहां से ही प्रकट हो जाते। ऐसे देखने जाए तो भगवान सब जगह है, लेकिन वो पिलर में से ही एग्जैक्ट प्रकट हुए। तो इसका रीजन ये भी है कि उनका जो फेथ है, पूरा जो विश्वास है प्रहलाद महाराज का भगवान के प्रति, वो जो फेथ है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। इनोसेंट फेथ है भगवान के प्रति। यस प्रभु जी। So there's another very interesting lesson here is the words of a devotee that is pure. In this case, the words of a pure devotee. But each one of you here listening to this conversation right now, podcast, each one of you have a little bit of Prahlad Maharaj in your heart because we love Lord Krishna. We love Lord Vishnu. We love uh, Tadhyana. Uh, we love things relate to Krishna, right? So we have a little bit of Prahlad Maharaj in our heart. And also our vachan, our words have effect. Maybe not as much as Prahlad. We not make Nrsingadev appear from a pillar or from anywhere, but we have a powerful, uh, our words are powerful because they are words of a preacher when we are describing the qualities, the philosophies, and the activities of Krishna consciousness. Because if we practice satyam, uh, truthfulness in our behavior, in our speech, we become empowered. And everything we say, it becomes reality. We have that power. You see? Uh, Therefore, we should always be satyam, be very truthful. It's hard to be truthful in Kali Yuga because there's so many, you know, determinate factors that always trying to push us here and there. But if you practice always revealing the truth and speaking the truth, we become very powerful. And when we speak of blessings, this is what I'm getting to. When we speak as blessing, maybe you become Krishna consciousness. You actually give the seed of Krishna in the heart of the person you're talking to. Your blessings comes with the seed that fructify in the heart of the person. You see, you may become prosperous, and that may cause prosperity in somebody's family. We become power to empower people around us by our own words, which is always controlled by truthfulness and truthful behavior and honest behavior, just like Prahlad Maharaj. You see, just like Prahlad Maharaj. Yeah. तो यहाँ पे हम प्रभु जी ने बताया कि हमें जो है कि हम यहाँ से एक ये लेसन सीखते हैं कि प्योर डिवोटी जो शुद्ध भक्त जो है, जैसे प्रहलाद महाराज जो है, हमने यहाँ पे पूरे हमारे पॉडकास्ट में सुना है यहाँ पे। तो हमारे हम जितने भी आप यहाँ पे हम भक्त जुड़े हैं आज इस पॉडकास्ट में, हम सबके हृदय में कहीं ना कहीं हम एक छोटा प्रहलाद महाराज है, क्योंकि हम जैसे प्रहलाद महाराज का भगवान विष्णु पे, जैसे कृष्ण पे जो विश्वास है, वैसे हम भी उनकी भक्ति करे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में भी एक छोटे प्रहलाद महाराज है। और प्रभु जी ने बताया कि हमारे जो वचन है, हमारे हम जो शब्द जो यूज करते हैं हम कहने में, तो वो बहुत ही मायने रखते हैं, बहुत ही ज्यादा वो पावर अपने आप में रखते हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि हम जो कुछ भी कहेंगे, कि भगवान प्रहलाद महाराज जी ने जैसे कहा था कि वो पीलर से प्रकट हो गए, तो ऐसा नहीं कि हमारे वचन में अभी इतना पावर है कि वो पीलर से प्रकट हो जाए या फिर कहीं और से प्रकट हो जाए, अभी इतना पावर नहीं है। लेकिन हमें इस चीज की प्रैक्टिस करनी है कि हमारे वचन, हम जो शब्द जो यूज करते हैं वो हम मतलब देख के सोच के समझ के उसका हम यूज करें। और हम जो सत्य है, जितना हो सके हम ट्रुथ जो है, सत्य है, उसको हम अपने लाइफ में रखें, और सच है उसको उसको बोले। तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि हम जो हमारी जो वाणी होगी, वो उसमें इतना पावर हो जाएगा कि हम जो कुछ कहेंगे या फिर किसी को हम एम्पावर भी कर सकते हैं। हमारे
हमारे सामने अगर कोई पर्सन आया या फिर हम किसी को समझाए, तो हमारे वचन इतने उस सत्य को पालन करते करते इतने वो मतलब हमारे वचन में इतना पावर आ जाएगा कि हम किसी के हृदय में भगवान के प्रति एक शुद्ध भक्ति उसके हृदय में प्रकट कर सकते हैं, उसके फैमिली में वगैरह। तो ऐसे हमें अपने वचनों का मतलब अच्छे से यूज करना। यस प्रभु जी। So we taking the lesson from Prahlad Maharaj. See that we chant even when life is difficult, and that is the hardest time to do. When life is difficult, to keep chanting the holy name. Okay? We not lose faith during the hardship, just like my god brother. His partner, wife left, he lose faith. Sometimes we have some in the family or somebody we love pass away. We lose. Well, why Krishna let this happen? Just like Krishna is is there to prevent people from dying around us. It's not like that. Okay, so we should have faith in the Krishna arranging the material energy around us. So we should see also, just like Prahlad Maharaj, that every challenge in our life is opportunity to remember Krishna, forgive other people. There's a lot to be forgiven, and depending on Krishna rather than depending on the material arrangements. यस। तो यहाँ पे हमें ये लेसन, ये सीख मिलती है कि हमारा जब बहुत ही ज्यादा कठिन समय आ जाए, तब हम भगवान के प्रति हमारा जो विश्वास है उसे और ज्यादा दृढ़ बनाए, ना कि उस विश्वास को छोड़ दे। और हमें अपना जैसे हमारा लाइफ लाइफ पे अगर जब कुछ ऐसा हार्ड कुछ कठिन समय आ जाए, तो हमें हमें अपना जब भगवान के प्रति और ज्यादा उसे बढ़ाना है, ना कि कम करना है। जैसे प्रभु जी ने बताया कि उनके जो गॉड ब्रदर है, उनके जो गुरु भाई है, जैसे उन्होंने अपना जो विश्वास था भगवान के प्रति वो छोड़ दिया, उन्होंने भक्ति भी छोड़ दी, उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली गई, फिर उनकी लाइफ में उनके जीवन में जो कुछ भी प्रॉब्लम आई, कठिन समय आया, जैसे उन्होंने छोड़ दिया, वैसे नहीं करना है। हमें अपने अपने विश्वास को और ज्यादा दृढ़ बनाना है। चाहे लोग आसपास में हमारे कुछ भी कहे कि देखो तुम भगवान को मतलब पूछते हो, भगवान को मानते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें ये वो करते हैं, चाहे लोग कुछ भी कहे, लेकिन हमें अपना विश्वास जो है वो दृढ़ बनाए रखना है। क्योंकि भगवान जो है, उन्होंने अपनी जो भौतिक संसार की ये जो एनर्जी, मटेरियल एनर्जी जो बना के रखी, वो उनकी अरेंजमेंट है। वो अपने हिसाब से सब कर रहे हैं। और हर डिफिकल्ट जो हर कठिन समय जो है, वो भगवान के नजदीक जाने के लिए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। इस चीज को हमें समझना है। यस प्रभु जी। So, in closing, Prahlad Maharaj shows that devotion is not measured by age, education, or social position. What is measured for? With is measured by the sincerity of one's love for Krishna. Even in the midst of danger, he remained peaceful because his heart never left the lotus feet of Lord Nrsimhadev. Om Namo Bhagavate Vasudev. यस। तो प्रहलाद महाराज जो यहाँ पे मतलब क्लोजिंग में यहाँ पे प्रभु जी बता रहे कि प्रहलाद महाराज जो है, उनका उनकी जो भक्ति है वो ये नहीं बताती कि तुम्हारी उम्र क्या है, कि तुम्हारी क्या मतलब एजुकेशन, तुम्हारी क्या पढ़ाई है, कि तुम्हारी क्या शिक्षा है, कि समाज में तुम्हारी क्या पोजीशन है, वो इन सब को नहीं बताती है। वो ये बताती है कि तुम कितना भी मतलब कठिन समय आ जाए, तुम शांत, मतलब जैसे प्रहलाद महाराज शांत रहे और उन्हें कंटिन्यूअसली ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान को हमेशा वो याद करते रहे, वैसे हमें यहाँ पे ये इस सीख को लेना है। यस प्रभु जी। So here we're going to open up for questions. So ओके। here we have, uh, okay, this is a question. I think it came a personal chat. It's from Bhakta Bhima. It's a good friend of mine. So he's saying that would you say very similar to Arjuna and Krishna relationship during the battle of Kurukshetra, basing on love, faith, and trust? And other things I'm going to answer a little bit each point by the time.
Krishna and Arjuna is not in the same category of Nrsimhadev and Prahlad. Arjuna, he was a qualified, he was a warrior, a prince, a warrior. And he was fighting there. He was just not, how to say, unprotected. He was protected with some abilities. But when the time comes that his abilities were not sufficient, Krishna stepped in. He got the will to protect Arjuna and attack Bhishma. He was like shooting arrows towards them. He was ready to protect Arjuna. But Nrsimhadev and Prahlad is a different department because Prahlad is a young kid. He's totally unprotected, vulnerable. He's not a fighter. He's not trained to be a kshatriya. It's just all he has is unflinching devotion to Lord Narayan, Nrsimhadev. You see? And that's what it makes him special in this particular position. Should I translate Okay. this or Yes. we'll go Yes. further? Yes. ओके ओके तो यहाँ पे किसी का क्वेश्चन था, मैं उनका नाम भूल गई, सॉरी. Who asked this question? Sorry, I forget the name of that devotee who asked this Because question. Bhima, Fernando, he is saying that Mhm. while Krishna and Arjuna has the same, no, they're also in love like that. But it's just like different devotees love Krishna in different ways. The Nrsimhadev and Prahlad is in the different category of Krishna and Arjuna. Because Arjuna, he was a qualified warrior, he could defend himself. And Prahlad was just a vulnerable kid, you see, Yes. with great love for Lord Vishnu. Yes. Okay, प्रभु जी, थैंक यू. सो यहाँ पे हमारे ग्रुप में से ही क्वेश्चन है ये कि ये जो फेर्नांडो करके है, सॉरी मैं थोड़ा प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रही हूँ. तो यस, तो उनका ये सवाल है कि जैसे भगवान कृष्ण जो है उनका ये अलग अलग जैसे रेसिप्रोकेशन है, जैसे प्रहलाद महाराज के साथ उन्होंने अलग किया और अर्जुन के साथ अलग किया, तो ये इतना दोनों में भेदभाव क्यों है? तो प्रभु जी ने यहाँ पे उनको इस सवाल का जो उत्तर दिया वो कुछ इस तरीके से है कि प्रहलाद महाराज जो है वो बहुत एक इनोसेंट बॉय, एक पूरा उनका अलग डिपार्टमेंट है, और जो अर्जुन है वो अर्जुन एक क्षत्रिय है, एक वॉरियर है, एक प्रिंस है उस समय के. तो उनका जो है एक युद्ध लड़ रहे थे, भगवान उनके साथ में थे, और जैसे भीष्म उनके सामने आए और भगवान ने भी उनकी ऐसे रक्षा की. तो वो पूरा करके एक अलग डिपार्टमेंट है, वो एक अलग लीला है, और यहाँ पर जो है वो एक प्रहलाद महाराज और नरसिंह भगवान की एक अलग लीला है. इन दोनों के पीछे जो थोड़ा सा अलग अलग है, इस चीज को हमें समझना है. यस प्रभु जी. So I open up for questions. We are in the top of the hour here. So I open up for questions, and you can write the questions or you can tell in the Zoom here. We take one or two questions before we close this beautiful podcast of our Prahlad Maharaj. While you take thinking in your question, I just want to tell a personal realization I have is that if there was not Nrsimhadev, this universe would not be complete. This is my conclusion. If Nrsimhadev was not in this universe wouldn't be complete, wouldn't be, complete as it is. Wow. And as a preachers, we all pray to Nrsimhadev to carry on our preaching engagement. Sometimes we meet little Hiranyakashipus that we have to deal with it. So Nrsimhadev is there. We be a little bit of a Prahlad Maharaj there. Hare Krishna. You mention your questions and we can go from there. किसी का कोई सवाल?
Till then, I want to share something today, which I heard from His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj, which I heard today in his one of the lecture about Prahlad, about Lord Nrsimhadev. One of the devotee he asked, like, we have like a Hare Krishna Maha Mantra we have. So why we need to sing the Aarti of Lord Nrsimha? Why is the difference? Is that not enough? Our Lord, the Hare Krishna Maha Mantra is not enough powerful. He has this question. So instead of that, Guru Maharaj answered this. He said, "Yes, Hare Krishna Maha Mantra is enough. He is powerful, but the Lord Nrsimha Dev is he is like a he is protecting us, something like that." And this is started from in our Gaudiya Vaishnava Sampradaya, in our SCON, especially when Srila Prabhupada had he had health issues so much in that time. Then devotees and his disciples started to pray from Lord Nrsimha for his health, for his better recovery, fast recovery. So today I heard about this. Very correct. We got our Nrsingadev in Mayapur, our Ugra Nrsinga, which is a very specific Nrsingadev. Ugra means, it's like ugly, but it's not ugly. Terrifying, terrifying. Because we were attacked in Mayapur. At that time, I was traveling in Sankirtan in Orissa, I think, and I heard, oh, no, the temple, they attacked the temple. So after that, there was a devotee, which is now a sannyas, Raghava Pandit. He lost a leg because of a bomb. They're throwing bombs like that. So we decide that we're going to get Nrsingadev. So we commissioned Nrsingadev in South India, which is so many pastimes related to Nrsingadev. There's related to Nrsingadev in there. The one of the pastimes, no, we're going to go just in the English, please forgive me. One of the pastimes was that, the Stapati, somewhere in Madras, in the area there, he was uh, slowly, he finished Nrsingadev, but he was not fully completing. He was not calling us, come and get Nrsingadev. He was protelando. I don't know how to say that. He was postponing, you see, Nrsingadev. So what happened is, at one point, his shop burned to a crisp. Everything but Nrsingadev. For some reason, Nrsingadev was really angry. So he called the devotees in Mayapur, please come, take Nrsingadev Taratari, man. I want Nrsingadev out. Quick, come quick. You see, Nrsingadev was in a hurry to come and come to Mayapur. So he came. We talked to Nrsingadev. We talked to Mayapur a few past times here and there in the trip. The police, they were stopped, at that time, I don't know if it's now, they have GST now in India, so that's tax, that's the national tax. But at that time, each state was like a country, so every time you go in the border with another state, you have to show paper, of the whole thing. So I come to know that, the policemen, they stopped just to see Nrsingadev. No, don't worry about papers, anything. I'll open this thing, and they see, they knock each other with the elbow, point the finger. They go like this. Okay, close, go, 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 go. Like that. So, Nrsinga is so powerful. So many pastimes with Nrsinga Dev, with the devotees, the eyes. That is, a lot of things. So there'll be, for another time. So thank you very much. Neha, how are you doing in the red card? Oh, yellow card. Oh, I like that. So we take one question because I'm the yellow card. Any questions? Hare Krishna, Prabhuji, that's Yes.
Devotee, I have a question that when we face problem in life, we need to keep our faith. Hold on, But in Mata, speak a little bit louder and more does clear, it please. Yes, is it please. louder, Devotee? Yes, now it's good. Yes, yes, Okay, okay. yes. So when we face problem in life, we need to keep our faith and increase our japa. But Mm. in those moments, what should we think or feel in order to strengthen our that faith? What kind of mindset or perspective should we adopt in those times? Like, does it should we think that these things are happening because of our karma, and so like how we can strengthen our faith? First, you should be concentrated in your determination. Determination is very important. You go over the hump. Now, regarding the difficulties in life, if it is your karma, if you think it's your karma, but while you are as a devotee, this karma is something you can use to be your akarma. In other words, it's something that you can use to serve Krishna by first a mental understanding and an adjustment, how you see this. You see, I remember in the good old times, we walk in those little pathways to go to the Ganga, and these farmers they have this thorn. They make this wall make of bamboo and thorns. It's like some kind of a tree in there. And the thorns are very big, it's like this, few centimeters, some of them. So we walk in there and he stepped one of those thorns and he has a chapel made of rubber. He went through the chapel and went right to his feet. And he goes, "Oh, Krishna." It's like Krishna did this to me because of my karma. But let me tell you something. Krishna never wants to hurt the devotees. Never. Matter of fact, perhaps you should have the foot turned out, and Krishna just let you a little thorn could come in. But Krishna, he not causing the thorn to come to your foot. You causing by not looking where is stepping. that is the truth. You'll be more careful. And then this thing won't happen to you. You avoid karma by being attentive, including in your japa and your devotional service in the things you do, in your life. You be perceptive, observant, and you can avoid a lot of trouble. You see, now we have four regulative principles. Is another way to avoid karma because a lot of karma coming from these things, intoxication. A lot of people are in prison, at least in America, because of intoxication. They get drunk, they do some stupid thing. They end up in prison 1 2 years, few months, because he beat up his wife, beat up his girlfriend, he did some very bad thing or driving drunk, all kinds of things. You see? And all this, you follow this, all this karma won't affect us. It can't touch us. Because that is the mercy of Srila Prabhupada. By giving this to us, we avoid a lot of karma. When we get a karma, things something that we think is a karma, right? Is actually opportunity. Opportunity. Okay? Opportunity for your mental position. Because sometimes it's your mindset that makes you suffer. If you move your mindset a little bit, you'll be more acceptable for what you have. And within that acceptance, you see a solution for what that is afflicting you or a way to cope better than you were before. You see, is suffering is a lot to do with your mind position. You see, bodily discomfort also is there. You see, but also it has a mind issue in there. So we think that both of them you manage what you think is a bad karma. So if I am
in Mayapur, it's so hot, no electricity. Well, that's a bad karma, right? I'm sweating like a piglet in there. No air, no AC, no even fan. So I said, okay. So I go to the Ganga. And then you see, I took something that is bad and make it something that's really good. I love the Ganga. I have a special place there. My Gopi Cabana and Ipanema, my two beaches in there. You see, so you turn something negative into something positive. Now, you cannot deal with the heat, but then the Ganga, by the way, Ganga, it cools your body to a point that, it's not so, how to say, it's not afflicting. By the evening time, everything cools down. It doesn't affect you that much. So one Ganga a day keeps the heat away. So there is so many ways that we can manipulate what we think is a bad karma into a good karma. You see, for example, let's say I try to do something, some kind of a business. I try to start a business, and the partner is not trustworthy. He try to cheat me or something. Well, one thing good to look at is that if you don't lose too much money, you consider that if I go with this partner for many years and 2, 3 years down the road, he's going to cheat me for much more money and the pain will be so much. No, now it's the beginning. It's nice. I can see and I can get away of the situation right now with very little financial stress. You see, there is things we can position the mind and see the things properly. And then we can avoid the full brunt of the so-called the distressful pain in the mind. You see? And you have to be positive about it because positive consciousness attract positive things. And the highest positive things, what is the highest positive things? The one and only Sri Krishna. He is the manifestation of the positiveness. You see? So for him, don't have good and bad. For his vision, that's only you and how much devotion are you growing in your heart. That's Krishna's viewpoint. You see? He sees lifetimes, he sees many decisions you're going to make in the future. He sees your proclivities. What is the kind of things you're going to choose in the future? You see? So he is doing a lot of things to guide you to the path. You see? And sometimes there is the path, there is a little bumps, there is stones, there is trees, there is things that hurt the car, your body, or whatever. You're going through these things. You have to tolerate and see as long as you follow the journey, you see, you are in good hands. Once we fall in self-pity. Oh, this, then we lost. That's the mode of ignorance. It's self-pity. We should have a little bit feel sorry for something, but don't dwell on that too much. Get up, move on, and move forward. Because moving forward is moving towards Krishna. Okay? So this is, we learn from our beautiful Prahlad Maharaj. Okay, and I take the blessings of you all. Thank you so much. Oh my God, I got red card. Oh, Krishna. No, see, have to see as a positive thing. Red card means time to go and see Krishna here in my house. Thank you. Hare Krishna. You don't forget to send me a little bit of the feedback. I like to hear from you all. So nice. Okay? Hare Krishna. With our permission.